Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Have you ever stopped to think about how much your job, maybe even your income, could be linked to things like, your family background or your religious community? It's a really big question, isn't it? It is, and today we're diving deep into exactly that. We want to understand how these social and religious distinctions are still shaping the labor market in India. Our plan is to unpack a fascinating brand new research paper. It's called Caste, Religion, and Job Market. Just published in 2025, right? In the Journal of Public Affairs. That's the one, by Aakanksha, Singhal, and Narendra, Kumar, Bishnoi. What makes it so powerful, I think, is that it uses really recent detailed data from India's periodic labor force survey, the PLFS. Gives us a fresh look. Yeah, and that's so important because, look, Indian society is incredibly complex, known for these intricate social layers based on caste and religion. Historically, these were very, very strongly tied to occupations. So this study asks a crucial question. Do these old communal norms still impact how much education actually pays off in today's job market? It's fundamental for understanding equity. Okay, before we jump into the findings, maybe we should quickly clarify a couple of terms we'll be using, like wage penalty and wage premium. Good idea. A wage penalty just means a group earns less, on average, than a sort of baseline group, even when you try to account for things like education or experience. And a premium is the opposite. They earn more. Simple enough. Okay, keeping that in mind, let's quickly set the scene with India's social structure. Historically, you had the ancient Varna system kind of sorting people into four main communities, but over centuries, that morphed into thousands of more local, rigid subcastes, the jates. Exactly. And for policy today, for things like affirmative action, it's mainly boiled down to four key categories. Scheduled castes, or SCs. Right. Scheduled tribes, STs, other backward classes, OBCs, and then the general category, sometimes called unreserved. And then layered on top of that, you have this incredible religious diversity. Absolutely. The study looks at the major groups: Hinduism, Islam, Christianity, Sikhism, Jainism, and Buddhism. And it's worth remembering what discrimination means in this context. The study defines it as basically being denied equal access to opportunities: economic, educational, social. Yeah. It's about being restricted from fully participating in the job market. So one thing that really struck me about this paper is how it tackles a gap in previous research. A lot of studies focus just on regular wage jobs, right? But this one brings in data on self-employed people too. Which is critical. That's a massive part of the Indian workforce, often just missed in these kinds of analyses. Exactly. And using the newer PLFS data gives us a much more current picture of wage gaps and potential discrimination across all kinds of work. So the data itself comes from 3 rounds of the periodic labor force survey. We're talking 2017-18, 18-19, and 19-20. It's a really big sample, lots of households, lots of individuals all across India. The social groups they looked at are general and reserved, SCs, STs, and OBCs. And for religion, Hindu is the baseline, the comparison point. Then they looked at Muslims, Christians, Sikhs, Jains, Buddhists, and an others category. And just looking at the raw numbers in the survey threw up some surprises. Like what? Well, Hinduism is obviously the majority religion in India overall, but within the employed people in this data set, Buddhists were actually the largest group. Really? Buddhists? Yeah, followed by others, then Christians, Hindus, Sikhs, Jains, and then Muslims. And for social groups, STs, scheduled tribes, were the majority of employed people in the sample, followed by SCs and OBCs. Wow, okay, that's definitely not what most people might guess. It immediately makes you ask why, doesn't it? It really does. So with that background, let's get into the core findings. How do these social factors actually translate into differences in pay, starting with those regular salaried jobs, the kind often seen as more stable? Okay, so for social groups in these regular salaried roles, the paper found a very clear, very consistent pattern. OBCs, SEs, and STs all face significant wage penalties compared to the general category folks. Consistently. And we're not talking small amounts. No, not at all. For OBCs, it was often several percentage points lower. For SCs, it frequently hit double digits, like 11% or more lower in some years. Wow. And STs also saw a persistent wage gap. These weren't just blips. The study found them statistically robust year after year in the data they looked at. So why? Why these ongoing gaps, even with things like reservation policies in place? Well, the paper suggests it's a mix of things. Persistent education gaps, yes, but also maybe less access to the really top-tier universities or institutions. Subtle biases in hiring,
maybe in setting salaries. And for STs specifically, geographical isolation is often a big factor, limiting access to the better jobs in cities or industrial hubs. It really makes you think, doesn't it? Imagine navigating the job market knowing that even if you have the same qualifications, you might consistently be starting from behind just because of your background. But there's a really crucial positive finding here, too. Oh. For scheduled tribes, those individuals who do manage to get higher education, they are actually quite successful in getting these regular, well-paid jobs. Oh, okay. So it strongly suggests education really does open doors and expand opportunities, even for the most marginalized groups. It underscores why investing in their access to quality education is so critical. Right. Education as a potential lever for change. Now, what about religion? How did that play out for regular salaried workers? Here, the picture is quite different depending on the group. The study points to a significant and honestly quite concerning wage penalty for Muslims compared to Hindus in these jobs. Yes, consistently across the study period. And in some of the later years examined, that penalty actually seemed to get larger, more pronounced. And the reasons? The paper links it to a couple of things. Sure. The lack of specific affirmative action policies targeting Muslims in the way they exist for SCs and STs, and also documented instances of, well, discrimination in hiring and in the workplace. Okay, so a clear disadvantage there. But what about other religious groups? Well, here's where it gets really interesting, because you see the opposite trend for some. Christians, for instance, consistently showed a wage premium. They earned more than the Hindu baseline. More. Yes, and that premium actually seemed to grow stronger over the years studied. Jains showed really substantial salary premiums, sometimes reaching over 25-29% higher than Hindus. Wow, that's a massive difference. It is. And Sikhs also started out with higher salaries, showing a premium particularly in the earlier years of the study. So why these premiums? What's driving that advantage? The paper offers a few explanations. For Christians, there's a long history of investment in education, often through missionary-run schools, frequently English medium, which tends to lead to better-paying jobs. Makes sense. Sikhs are often concentrated in urban areas, in key economic sectors. They benefit from strong community networks and also a history of migration, which often correlates with economic success. Okay. And Jains, with those really high premiums. Jains tend to achieve very high levels of education, especially in professional fields. There's a strong cultural emphasis on entrepreneurship, business skills, and using their social connections effectively. And underpinning all this, the study notes that these groups, Christians, Sikhs, Jains, also have significantly higher literacy rates than the Hindu baseline. Education clearly plays a huge role. Right. What about Buddhists? You mentioned they were the largest employed group in the sample. How did their wages look? For Buddhists, it was more complex. They faced a salary disadvantage compared to Hindus in the earlier years, although this gap did seem to shrink gradually over time. And the paper highlights an interesting dynamic here between social group and religion. Many Buddhists in India are converts, often from former untouchable castes, the SCs. Ah, okay. So it suggests that even after converting to a different religion, the historical stigma associated with their caste background might still be impacting their economic mobility. It's like a double disadvantage in some ways. That's a really crucial point, the intersectionality of it all. Okay, we've talked about the formal sector, the salary jobs, but as you said, India's economy is so much more diverse. Millions work informally, casual labor, self-employment. This paper looked at them too, which is quite unique. What did it find there? Yes, and this is where some findings really flip the script. Take casual workers, for example. For Muslims, remember how they faced a penalty in salary jobs? Yeah. Well, in casual work, they often turn to the informal sector, perhaps because of those disadvantages. And here, surprisingly, they experienced a wage premium over Hindus. A premium in casual work. That seems counterintuitive. It does. Consistently across the years, study too. It might suggest, strong internal community networks or specific skills that give them the edge in that less formal market. But, and this is a big but, the study also points out a major challenge. Even when educated Muslims invest in skills, they seem to struggle to move out of casual work into more stable professions. So there's still a barrier to upward mobility there. Interesting paradox. What about Sikhs and Christians in casual work? They also generally saw pay benefits, wage premiums, throughout the study period. Again, likely linked to strong community ties, better education access on average, and possessing marketable skills that help even in informal settings. And Buddhists and Jains? A different story there. Buddhists face consistently negative wage returns in casual jobs.
quite significant penalties, actually, across all the years. Penalties, okay. And Jains also tended to experience pay disadvantages when they did casual work. The paper suggests this reflects their cultural preference. They'd rather be self-employed or in compensated roles, so engaging in casual labor might indicate more precarious circumstances for them. Right. Now let's look at the social groups SCs and STs in this casual work environment. Similar to salaried jobs, they face consistent wage penalties compared to the unreserved category. SCs had noticeable penalties. And for STs, the penalties were even higher and seemed to increase over the study period. The reasons cited are familiar: often lower education, fewer specialized skills, geographical remoteness, and being concentrated in lower paying sectors like agriculture or basic contract work. Okay, that covers casual work. Now let's shift to the third category, self-employed individuals. The paper notes that caste and religion can really shape the whole environment for starting and running a business. Absolutely. And here again, we see some stark contrasts. For Muslims, unfortunately, the pattern was significant wage penalties in self-employment. Penalties again, even in entrepreneurship. Yes, persisting and even deepening over the years studied. The paper links this to things like limited access to capital loans, investment lower average education levels affecting business management, potential market discrimination, and maybe weaker business networks compared to other groups. It's that paradox again you mentioned earlier, Islam sometimes being seen as an entrepreneurial religion, yet the data shows these hurdles. Exactly. It really highlights the gap between, say, cultural encouragement and the hard realities of systemic barriers like access to finance or facing bias in the marketplace. So who did well in self-employment? Well, this is where Christians, Sikhs, and Jains really shone. They saw substantial wage premiums. Substantial. Very. Sikhs had impressive premiums, sometimes over 40% higher than the baseline. The paper connects this to the Sikh principle of Kirat Karni, honest, diligent livelihood. Jains showed the highest premiums consistently, sometimes exceeding 40% as well. This aligns with their high rates of self-employment and the cultural value placed on business acumen, and interestingly, benevolence and attention to business mentioned in Jainism. Fascinating. And Christians. Christians also showed strong premiums, maybe linked to the encouragement of individualism and initiative within Christianity. Even Buddhists showed a notable wage premium in the earlier years, possibly tied to their emphasis on education and supportive community networks, helping with entrepreneurial efforts. Okay, a much more positive picture for those groups in self-employment. What about the social groups, OBCs, SCs, STs? For them, the picture in self-employment was tougher. OBCs faced wage penalties throughout the years. Scheduled castes faced quite significant wage penalties, and these actually seem to grow over time. The paper suggests this might be due to lacking the kind of safety nets or support systems, access to capital, strong business networks that higher castes might have to navigate failures or scale up. Right, less room for error, perhaps. And STs. That's where the most severe wage penalties were observed. Really large gaps compared to the general category, and these penalties also grew significantly larger over the study period. Why so severe for STs? Often, it's linked to necessity entrepreneurship, things like gathering and selling forest produce, very basic activities, plus the familiar factors: geographical isolation, limiting market access, very low average education and skill levels, and smaller, less influential social networks for business support. So a very challenging situation for SCs and especially STs in self-employment. Definitely. But there's an overarching insight here that's quite positive, actually. Okay. The study notes that overall, the returns to self-employment for many of these social and religious groups often seem to be higher than the returns they get from regular salaried or casual work. Ah, so even with the penalties for some, self-employment might still be a better path than the alternatives. It could signal that. It suggests perhaps a decreasing reliance on traditional employment structures and maybe positive developments in entrepreneurship happening in, India's smaller towns and rural areas, the hinterlands. A potentially positive trend. Okay, so we've gone through salaried, casual, and self-employed work. Stepping back, what's the big picture message here for you listening? I think the research makes it undeniably clear. Caste and religion are not just historical artifacts in India. They are still very much active, significant forces. They profoundly influence which jobs people get, the kind of work they do, and ultimately how much they earn. And the study also touches on the COVID-19 pandemic, right? Did that change things? It did, and mostly not for the better regarding these disparities. Before the pandemic, say 2017 to 2020, we saw those consistent patterns, Muslims, SCs, STs generally earning less. Post-pandemic, looking at data up to 2023, those gaps didn't disappear.
In some cases, they actually became more noticeable. Muslims in regular jobs, for instance, saw a particularly large wage decline relative to the baseline. And SCST individuals. They were hit hard across all types of work, often being in less stable employment to begin with. They had fewer safety nets, less access to social help during the lockdowns and economic disruption. The pandemic seemed to exacerbate existing inequalities. So the core argument of the paper holds. Caste, education, and religion are deeply tangled together in India. Exactly. With really significant implications for development overall, and specifically for education policy. Of course, every study has limitations. What did the authors acknowledge here? Right, they're careful to point that out. These statistical models, these estimates, they can't capture everything. They don't account for things like inherent individual abilities or, crucially, the quality of education someone received, not just the years spent in school. Or family connections. Precisely. Familial influence, networks. Those can massively impact the quality of schooling you get and the job opportunities that open up later. So that leaves important questions for future research to explore those nuances more deeply. But the paper doesn't just diagnose the problem, it also proposes solutions. It outlines quite a comprehensive policy framework. It does. It really tries to offer a constructive path forward. What are some of the key recommendations? Well, one big area is strengthening existing policies. Rigorously following up on and evaluating the reservation laws for SCs, STs, and OBCs in government jobs and education. And importantly, finding ways to promote fair representation in the private sector too, perhaps through incentives or transparency measures. Okay, so better enforcement and maybe extension. What else? Skills development is huge, improving programs specifically designed for disadvantaged groups. They mentioned schemes like Siko Arkamal for minority youth, Nai Manzil for Muslim school dropouts, Ustad for traditional craftspeople, making sure these programs are effective and accessible. And entrepreneurship support. Yes, tailoring programs like Stand Up India or Startup India to better meet the needs of SCST and minority entrepreneurs, providing not just loans, but mentorship and real support. Makes sense. What about direct educational support? Expanding successful programs is key. Things like the National Fellowships for SCST students pursuing higher education, the Top Class Education Scheme for merit students from these groups, and strengthening basic pre-matric and post-matric scholarships to ensure kids can stay in school. They also suggest tweaking rural skill programs like the Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojana to better fit the specific needs of tribal communities and undeveloped regions. So a very multi-pronged approach. Indeed. And one final, broader idea they float is establishing a dedicated National Employment Equity Council. To do what exactly? To basically act as a watchdog, to monitor wage gaps, track workforce diversity across sectors, and provide a central body focused specifically on tackling these systemic employment inequalities. Wow, that's a lot to take in. This deep dive really highlights just how persistent these societal structures are, how they seep into areas like the job market that we might assume are purely merit-based. It really does. The data paints a compelling, if sometimes sobering, picture. It definitely leaves you with a lot to think about. Absolutely. And perhaps a final thought for you, the listener, to mull over. Thinking about India, but maybe also other diverse societies facing similar challenges, how can we use this kind of specific understanding? Understanding the cultural factors, the social dynamics that either hold people back or help them succeed within different communities. How can that knowledge help craft policies that are truly effective in tackling inequality, rather than just applying one-size-fits-all solutions? That's a powerful question to end on. We really hope this deep dive into the complex world of caste, religion, and work in India has given you some new perspectives, maybe a few aha moments. Until next time, keep digging deeper into the world around you. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। আজকের আলোচনাটা একটা গবেষণাপত্রের উপর ভিত্তি করে। এটা জার্নাল অফ পাবলিক অ্যাফেয়ার্সে ছাপা হয়েছে। বেশ নামী জার্নাল, মানে এবিডিসি বি লিস্টে আছে। হ্যাঁ, ঠিক। আর পেপারটা হলো ভারতের লেবার মার্কেটে জাতি আর ধর্মের ভিত্তিতে মাইনের ফারাক নিয়ে। একদম। আর এই কাজটা পড়লে না, মানে শুধু ডেটা নয়, এটা যেন মনে করিয়ে দেয় যে জ্ঞান বা মানুষের অনুভূতি, এগুলো তো শুধু সংখ্যা দিয়ে বোঝা যায় না, এগুলো জীবনের অভিজ্ঞতা। ঠিক বলেছেন।
তাই আমি শুরুতেই বলবো, যারা শুনছেন আমাদের এই কথাগুলো শোনার পর একটু সময় করে পেপারটা পড়বেন প্লিজ। লিঙ্কটা শো নোটসে থাকবে। সত্যি খুব ভালো কাজ। অবশ্যই পড়া উচিত। আচ্ছা, আমরা আজকে মূলত এর পদ্ধতিটা নিয়ে একটু কথা বলতে চাই। মানে যারা সবে রিসার্চ শুরু করছেন বা পাবলিক অ্যাফেয়ার্স, স্ট্যাটিস্টিক্স এই সবে আসছেন তাদের জন্য। হ্যাঁ, মানে কিভাবে গবেষকরা এই ধরনের সেন্সিটিভ টপিক নিয়ে কাজ করেন সেটা বোঝাটা খুব জরুরি। তো শুরু করি ডেটা দিয়ে। কোত্থেকে নিলেন তারা এত তথ্য? তারা ব্যবহার করেছেন পিরিয়ডিক লেবার ফোর্স সার্ভে, মানে PLFS ডেটা। 3টে রাউন্ডের, 17, 18, 18, 19 আর 19-20। এটা ভারত সরকারের বেশ নির্ভরযোগ্য সার্ভে। আচ্ছা, এতে নানা রকম সামাজিক গোষ্ঠী, যেমন ধরুন SC, ST, OBC, জেনারেল, এদের সবার তথ্য আছে। আর ধর্মীয় গোষ্ঠীও, হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ, মানে সব। বিশাল ডেটা সেট তাহলে। তো এই ডেটা দিয়ে মাইনের ফারাকটা মাপলেন কিভাবে? কোনো মডেল? হ্যাঁ, একটা বেশ চালু মডেল আছে অর্থনীতিতে, মিনস্যারিয়ান ওয়েজ ইকুয়েশন বলে। ও, মিনস্যারিয়ান। হ্যাঁ, সহজ করে বললে এটা দেখে যে একজন লোকের আয় কতটা নির্ভর করে তার লেখাপড়ার বছর আর কাজের অভিজ্ঞতার ওপর। অভিজ্ঞতাটা অবশ্য সরাসরি মাপা মুশকিল, তাই বয়সটাকে একটা প্রক্সি বা আন্দাজ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু ভারতে তো শুধু লেখাপড়া বা অভিজ্ঞতা দিয়ে সবটা বোঝা যায় না, তাই না? জাতি, ধর্ম এগুলো তো প্রভাব ফেলে। ঠিক এটাই পয়েন্ট। সেজন্য ওরা কি করেছে, এই বেসিক মডেলে আরও কিছু জিনিস যোগ করেছে। যেমন ধরুন, লোকটার সোশ্যাল গ্রুপ কি, রিলিজিয়ন কি, জেন্ডার, গ্রামে থাকে না শহরে, এইসব। আচ্ছা, মানে কন্ট্রোল ভেরিয়েবল হিসেবে এগুলো যোগ করা হয়েছে বলতে পারেন। এর ফলে বোঝা যায় যে এডুকেশন আর এক্সপিরিয়েন্স বাদ দিলেও এই পরিচয়গুলো আলাদা করে আয়ের উপর কোনো এফেক্ট ফেলছে কিনা। এটা তো খুব ইন্টারেস্টিং, কিন্তু আমার একটা প্রশ্ন জাগছে। আচ্ছা, যারা কাজ করছেন শুধু তাদের ডেটা নিলে কি ছবিটা একটু একপেশে হয়ে যায় না? বাহ, খুব জরুরি প্রশ্ন। মানে ধরুন কেউ হয়তো কম মাইনের জন্য কাজই খুঁজছে না, সে তো বাদ পড়ে গেল। একদম, এটাকে বলে সিলেকশন বায়াস, মানে নির্বাচন পক্ষপাত। যারা কাজের বাজারে নেই তাদের বাদ দিয়ে যদি শুধু কর্মীদের মাইনে দেখি তাহলে তো ভুল ধারণা হতে পারে। হ্যাঁ, সেটাই। হয়তো দেখা গেল কোনো গোষ্ঠীর লোক কম মাইনের জন্য কাজ করছেই না। তাদের বাদ দিলে যারা কাজ করছে তাদের গড় মাইনে দেখে মনে হতে পারে, আরে এদের অবস্থা তো অত খারাপ না। ঠিক। তো এই সমস্যাটা এড়ানোর কোনো উপায় আছে? হ্যাঁ আছে। গবেষকরা একটা বিশেষ স্ট্যাটিস্টিক্যাল টেকনিক ব্যবহার করেছেন। এটার নাম হেকম্যান 2-স্টেপ মেথড। হেকম্যান পদ্ধতি, এটা কি জিনিস? একটু সহজ করে যদি বলেন যারা নতুন তাদের জন্য। অবশ্যই। এর মূল আইডিয়াটা হলো সরাসরি মাইনে বিশ্লেষণ না করে দুটো ধাপে কাজটা করা। প্রথম ধাপে দেখা হয় কারা কারা কাজের বাজারে অংশ নেওয়ার সম্ভাবনা রাখে, মানে কারা কাজ করতে ইচ্ছুক বা সক্ষম। আচ্ছা, মানে লেবার ফোর্স পার্টিসিপেশন। ঠিক, সেই সম্ভাবনাটা আগে গণনা করা হয়। তারপর দ্বিতীয় ধাপে ওই সম্ভাবনাটাকে হিসেবে ধরে, মানে ওটাকে অ্যাডজাস্ট করে মাইনের ইকুয়েশনটা সলভ করা হয়। ও, ইন্টারেস্টিং। তার মানে যারা কাজের বাইরে তাদের সম্ভাব্য প্রভাবটাও এর মধ্যে চলে আসছে। একদম। এর ফলে ওই সিলেকশন বায়াসের সমস্যাটা অনেকটাই কেটে যায়, মানে রেজাল্টটা অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য হয়। দারুণ তো। তাহলে এই পদ্ধতি ব্যবহার করে ওরা কি খুঁজে পেলেন? মানে ফাইন্ডিংসগুলো কি ছিল? হ্যাঁ, এই পদ্ধতি ব্যবহার করে বেশ কিছু জরুরি জিনিস উঠে এসেছে। যেমন দেখা গেছে যে বিভিন্ন সোশ্যাল আর রিলিজিয়াস গ্রুপের মধ্যে মাইনের বেশ বড়সড় পার্থক্য আছে। আর এই পার্থক্যটা শুধু শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার তফাৎ দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাচ্ছে না। যেমন কোনো নির্দিষ্ট উদাহরণ? যেমন ধরুন, রেগুলার স্যালারিড চাকরিতে মুসলিমদের মাইনে কম হওয়ার একটা প্রবণতা দেখা গেছে। আবার ধরুন, যারা সেলফ এমপ্লয়েড বা ক্যাজুয়াল লেবার তাদের মধ্যে শিডিউলড ট্রাইব বা এসটিদের আয় কম। আর কাদের বেশি? অন্যদিকে খ্রিস্টান আর শিখ কমিউনিটির মানুষজন প্রায় সব ধরনের কাজেই তুলনামূলকভাবে বেশি আয় করছেন দেখা গেছে। মানে এই পার্থক্যগুলো কিন্তু শ্রমবাজারে এক ধরনের বৈষম্যের দিকেই ইঙ্গিত করছে। এই ফাইন্ডিংসগুলো তো বেশ ভাবার মতো। আচ্ছা, যারা নতুন রিসার্চার তাদের জন্য এই পেপারটা থেকে টেক অ্যাওয়ে কি হতে পারে? আমার মনে হয় দুটো প্রধান জিনিস। এক,
কিভাবে একটা জটিল সামাজিক সমস্যা যেমন বৈষম্য সেটাকে একটা খুব সিস্টেম্যাটিক আর রিগোরাস স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড দিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়। হ্যাঁ, মেথোডোলজিটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আর 2, ডেটা ব্যবহারের সময় কতটা সতর্ক থাকতে হয়। এই যে সিলেকশন বায়াসের মতো সমস্যা, সেটাকে চেনা এবং তার মোকাবিলা করার জন্য সঠিক পদ্ধতি, যেমন এখানে হেকম্যান, সেটা ব্যবহার করা, এই জিনিসগুলো শেখা খুব জরুরি। আর আমরা আবার মনে করিয়ে দিই, এই আলোচনাটা কিন্তু পুরো পেপারের একটা ঝলক মাত্র। এর ভেতরে অনেক ডিটেলস, অনেক অ্যানালিসিস আছে। সেটা বুঝতে হলে কিন্তু অবশ্যই পুরো পেপারটা পড়তে হবে। লিঙ্কটা শো নোটসে আছে। হ্যাঁ, বিশেষ করে ওরা যে 3 ধরনের কর্মী, রেগুলার, ক্যাজুয়াল আর সেলফ এমপ্লয়েড, সবাইকে নিয়েই কাজটা করেছে, এটা খুব কম গবেষণায় দেখা যায়। একদম। আর এখানেই হয়তো শেষ প্রশ্নটা আসে। এই যে পরিমাণগত গবেষণা, কোয়ান্টিটেটিভ স্টাডি, এটা তো মাইনের ফারাকের প্যাটার্নগুলো খুব পরিষ্কার করে দিল, সংখ্যা দিয়ে দেখাল কোথায় তফাৎ। কিন্তু এই সংখ্যাগুলোর পেছনে আসল কারণগুলো কি, মানুষের অভিজ্ঞতাগুলো, সুযোগের অভাব, এইগুলো বুঝতে গেলে হয়তো আরও অন্য ধরনের গবেষণা দরকার, তাই না? কোয়ালিটেটিভ বা মিক্সড মেথড হয়তো। খুব ভালো একটা প্রশ্ন। এটা নিয়ে ভবিষ্যতে ভাবা যেতে পারে। আজকের মতো তাহলে এখানেই শেষ করি। আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। नमस्कार। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्टडी पर बात करने वाले हैं। जी। ये जर्नल ऑफ पब्लिक अफेयर्स में छपी है। जी। ये एक काफी मानवा जर्नल है, ABDC B कैटेगरी का। हाँ, पीयर रिव्यूड है, मतलब विशेषज्ञों ने इसकी जांच की है। बिल्कुल। और इसके लेखक हैं आकांक्षा, जो गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से हैं, भरत सिंघल, एक स्वतंत्र अर्थशास्त्री, और नरेंद्र कुमार बिश्नोई, ये भी गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से हैं। जी। तो ये स्टडी असल में भारत के लेबर मार्केट को देखती है। हाँ, ये जानने की कोशिश करती है कि अलग अलग सामाजिक और धार्मिक समूहों के लोगों की कमाई में, मतलब वेतन में, कितना फर्क है। और इसके लिए इन्होंने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे यानी PLFS का डेटा इस्तेमाल किया है। हाँ, वो सरकारी सर्वे जो थोड़े थोड़े समय पर होता है। तो मुख्य सवाल यही है कि क्या किसी की जाति या धर्म का असर इस बात पर पड़ता है कि उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई का कितना फायदा मिल रहा है, मतलब सैलरी वगैरह में। बिल्कुल। और अगर पड़ता है तो कितना, यही पता लगाने की कोशिश है। तो खासकर उनके लिए जो अभी रिसर्च में नए हैं या जिन्हें आंकड़ों वगैरह की ज्यादा जानकारी नहीं है, ये समझना दिलचस्प होगा कि रिसर्चर्स ऐसे सवालों के जवाब ढूंढते कैसे हैं। सही बात है। तो आज हम इसकी मेथोडोलॉजी यानी इसके तरीके पर थोड़ा ध्यान देंगे। क्यों? हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, रिसर्चर्स ने 2017-18 से लेकर 2019-20 तक 3 साल का PLFS डेटा लिया। काफी सारा डेटा होगा ये तो। हाँ, बहुत बड़ा सर्वे होता है ये, हजारों घर शामिल होते हैं। तो उन्होंने लोगों को उनके धर्म के हिसाब से बांटा, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख वगैरह। और सामाजिक समूह के हिसाब से भी, जैसे जनरल, SC, ST, OBC। जी हाँ, वैसे भी बांटा। फिर कमाई के फर्क को समझने के लिए उन्होंने एक खास मॉडल इस्तेमाल किया, मिन्सेरियन इनकम मॉडल कहते हैं इसे। मिन्सेरियन मॉडल, ये क्या होता है? हाँ। ये समझ लीजिए कि एक स्टैंडर्ड तरीका है, एक तरह का फॉर्मूला। ये देखता है कि आपकी पढ़ाई, मतलब कितने साल स्कूल गए, और आपका काम का तजुर्बा यानी वर्क एक्सपीरियंस आपकी कमाई पर कितना असर डालते हैं। अच्छा, तो ये तो सीधी बात लगती है, इसमें कुछ खास? हाँ, खास ये है कि उन्होंने सिर्फ इन्हीं 2 चीजों को नहीं देखा। अच्छा। उन्होंने मॉडल को और बेहतर बनाया, ये देखने के लिए कि दूसरी चीजें, जैसे कोई कहाँ रहता है, शहर या गांव, औरत है या मर्द, किस सामाजिक समूह से है, किस धर्म का है, इन सब का भी कमाई पर क्या असर पड़ रहा है। मतलब कई सारे फैक्टर्स एक साथ देखे। बिल्कुल, ताकि तस्वीर ज्यादा साफ हो सके। और एक और बहुत जरूरी चीज की। वो क्या? उन्होंने हैकमैन 2 स्टेप मेथड इस्तेमाल किया। हैकमैन, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है। हाँ, थोड़ा है, पर आसान भाषा में समझे तो सोचिए, अगर हम सिर्फ उन लोगों की सैलरी देखें जिनके पास अभी नौकरी है, तो शायद हमें पूरी कहानी ना पता चले। क्यों? क्योंकि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं, हो सकता है उनकी प्रोफाइल अलग हो, शायद उन्हें अच्छी सैलरी वाली नौकरी मिल ही नहीं रही थी। इसे सैंपल सिलेक्शन बायस कहते हैं। मतलब हमारा सैंपल शायद पूरी आबादी को सही से नहीं दर्शा रहा। अच्छा, तो ये हैकमैन तरीका इस गड़बड़ी को ठीक करता है। हाँ, बिल्कुल। ये इस बायस को कम करने में मदद करता है। इसमें 2 स्टेप होते हैं। पहले स्टेप में ये अंदाजा लगाया जाता है
कि किसी के नौकरी में होने की संभावना कितनी है। ठीक है। और दूसरे स्टेप में सैलरी का अंदाजा लगाया जाता है, लेकिन पहले स्टेप के नतीजे को ध्यान में रखते हुए। समझ गया। मतलब ये तरीका ज्यादा भरोसेमंद नतीजे देता है। हाँ, इससे हम ज्यादा यकीन से कह सकते हैं कि जो कमाई में फर्क दिख रहा है वो वाकई भेदभाव की वजह से है या सिर्फ पढ़ाई या तजुर्बे के फर्क से। अगर सारे फैक्टर्स कंट्रोल करने के बाद भी फर्क दिखता है तो वो भेदभाव की तरफ इशारा करता है। बिल्कुल। और उन्होंने रेगुलर सैलरी वालों, दिहाड़ी मजदूरों और अपना काम करने वालों तीनों के लिए अलग अलग ये विश्लेषण किया। ये भी जरूरी है क्योंकि तीनों तरह के काम बहुत अलग होते हैं। जी हाँ। तो इस सारे विश्लेषण के बाद मुख्य नतीजे क्या निकले? क्या पता चला? नतीजे काफी दिलचस्प हैं। जैसे रेगुलर सैलरी वाली नौकरियों में एसटीज यानी अनुसूचित जनजातियों को एससीज और ओबीसीज के मुकाबले ज्यादा पैसे मिलते दिखे, एक तरह का प्रीमियम। ओह, ये तो उम्मीद से थोड़ा अलग है। हाँ, लेकिन यही एसटी लोग जब दिहाड़ी मजदूरी या अपना काम करते हैं तो उन्हें कम पैसे मिलते हैं। मतलब वहां उन्हें नुकसान है, एक तरह का दंड। बाप रे, एक ही ग्रुप के लिए इतनी अलग तस्वीर। नौकरी के टाइप पर निर्भर करता है। बिल्कुल। और धर्म के आधार पर देखें तो रेगुलर सैलरी और अपना काम करने वाले मुस्लिम लोगों को हिंदुओं के मुकाबले औसतन कम वेतन मिलता दिखा। यानी वहाँ एक तरह का दंड। हाँ, पर दिहाड़ी मजदूरी करने वाले मुस्लिम कामगार हिंदुओं से ज्यादा कमाते दिखे, वहाँ प्रीमियम। ये तो और भी पेचीदा है। हाँ, बहुत। और ईसाई और सिख समुदाय के लोग लगभग हर तरह की नौकरी में हिंदुओं से ज्यादा कमाते पाए गए, उन्हें प्रीमियम मिल रहा था। तो ये नतीजे क्या बताते हैं? क्या ये सीधे सीधे भेदभाव की तरफ इशारा करते हैं? ये नतीजे कम से कम ये तो जरूर दिखाते हैं कि लेबर मार्केट में सिर्फ मेरिट या पढ़ाई लिखाई सब कुछ नहीं है। सामाजिक और धार्मिक पहचान भी एक बड़ा रोल निभा रही है, और ये भेदभाव की मौजूदगी का एक मजबूत संकेत है। और शिक्षा का फायदा सबको बराबर नहीं मिल रहा। सही बात है। ये स्टडी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने सेल्फ एम्प्लॉयड यानी अपना काम करने वालों को भी शामिल किया। ये भारत की वर्कफोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन अक्सर रिसर्च में इनकी बात नहीं हो पाती। सच कहा। ये स्टडी वाकई इस बात को पुख्ता करती है कि ज्ञान, सहानुभूति ये सब सिर्फ किताबी बातें या आंकड़े नहीं हैं, ये असल जिंदगी में जिए जाते हैं। बिल्कुल। किसी की सामाजिक या धार्मिक पहचान उनके आर्थिक जीवन को कैसे प्रभावित करती है, ये समझने के लिए ऐसा कठोर विश्लेषण बहुत जरूरी है। हम अपने सुनने वालों से जरूर कहेंगे कि इस लेख को पढ़ने के लिए समय निकालें। ये काफी सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, लिंक हमने शो नोट्स में दे दिया है, जरूर पढ़िएगा। और जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाते हैं। ये स्टडी आंकड़ों से भेदभाव के पैटर्न दिखाती है। इस पर सोचिएगा कि ये आंकड़े असल जिंदगी के अनुभवों और मौकों से कैसे जुड़ते हैं, और इन अंतरालों को पाटने के लिए सिर्फ सरकारी नीतियों के अलावा और क्या करने की जरूरत हो सकती है।